Unit 3, finance portion we are starting. Let me come again with the syllabus. We will study today what is finance, nature and scope of finance, form of business ownerships. Then we'll discuss ahead uh, balance sheet, profit and loss account, fund flow and cash flow statements, break even point, and financial ratios, payback period, and capital budgeting. This much we will cover in finance. Basically, these are very detailed topic, but you have basics of it only in your syllabus, as it is only half of your unit. We are studying this in detail in MBA and some specific syllabus where all these comes under 5 to 10 units. So even if you want a detail of it, you can ask me at any point of time. Let us go through what is finance. What is finance? Finance basically deals with the money management. मनी बहुत जगह यूज होता है, चाहे हमको इन्वेस्ट करना हो, चाहे हमको अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना हो, दूसरे के बिजनेस में इन्वेस्ट करना हो, बोरो करना हो, कहीं से भी लेंड करना हो, किसी को देना हो, बजटिंग करनी हो, अलग अलग चीज के ये अलग पोर्शन के लिए अलग अलग पोर्शन ऑफ अमाउंट विल अलॉट फॉर सम डिफरेंट थिंग्स. सेविंग्स ये मिडिल क्लास की पसंदीदा चीज है. फोरकास्टिंग कि मुझे इतना पोर्शन इसके लिए रखना है, इतना पोर्शन इसके लिए रखना है, ये पोर्शन जब ये होगा तब करूंगा. ये सारी चीजें हैं जो कि फाइनेंस को डिफाइन करती हैं. Then we have three main types of finance. One is personal finance, another is corporate finance, third one is public या government finance. ये तीन तरह से क्लासीफाई इसको किया जा सकता है. Then what is nature of finance? फाइनेंस तो इस तरह की चीज है जो कि जन्म के साथ शुरू होती है और मृत्यु पे ही खत्म होती है. फाइनेंस मतलब हमारे जीवन के साथ, जिसके कहते हैं ना, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी आदमी जब बर्थ करता है तो उतना खर्च नहीं होता जितना मरने पर होता है. सो मरना कितना इम्पोर्टेंट है ये भी थोड़ा समझ में आता है. तो मतलब कहने का मतलब ये है कि right from the birth till the death of any person or an organization, finance plays an important role. Even at the age of child, when someone is born, we require money, and just a minute. And when we even grow older, the requirement of money, it increases. Even as I told you, the final ritual requires large amount of money as compared to our birthday, you know. So similar thing happen with the business. It grows, it born, it grows, it dies. At every point of time, at every stage, we need a finance. But even at the age of when we are disposing our business, if it's not earning, even we need to invest. Finance is available nowadays from finance is available in nowadays. Finance is available at from various institutes. Various money lenders are available in the market as per the various conditions. That depends upon the nature of the finance and the decisions to be taken in whether to go or not, on how much to go. And nature also depends upon the attitude of the lender, to which borrower may not be comfortable sometimes. और किस टाइप का है, शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, है ना. तो ये सारी चीजें हैं, हमको देखना होता है. देन कम्स दी कुछ फंक्शंस हैं, मेजर 6 मेजर फंक्शंस हैं. लेट अस सी दोस 6 मेजर फंक्शंस. Let us see. 6 major functions. Number one is financial planning. Financial planning. Finance is having planning कि कैपिटल में कितना इन्वेस्ट करना है, कैश फ्लो में कितना इन्वेस्ट करना है, फंड फ्लोस में कितना इन्वेस्ट करना है, आउटफ्लोस में कितना इन्वेस्ट करना है, बाहर से जितना हमारे पास अमाउंट है बाहर से कितना लेना है, या एक्सेस है तो क्या लैंड करना है,
दोनों तरीके से बिजनेसमैन कमा सकता है। रेज फंड्स तो बहुत तरीके से बाहर से फंड्स को रेज किया जा सकता है ना, बहुत तरीके से बाहर से फंड्स को रेज किया जा सकता है। तो उसको हमको जस्ट अ मिनट, शेयरिंग स्क्रीन गोज ऑफ एक्चुअली। So third one is allocation of funds. Yes, business has many portions of funds. We have to allocate according to the activities planned. Then effective use of those funds are required. Effective use माने appropriate manner में usage, उसका न higher wastage हो, न भी उसका ये हो, एक्सेस एक्सेस यूज भी ना हो और कम भी ना हो। ये दोनों चीजें one has to really think into it. And then comes the financial control, budgetary control. Yes, I told you, budget is very important. And the last one, last function is very important because this has overall control of the domain finance, and which gives you the clear picture about the performance of the target achieved. Now let us go through what are the scope of finance. No doubt, finance has functional scope. It is very wide in nature, because this function affects almost all the aspects of the firm's operation. Very small operation involves the scope of finance, and all the judgments comes under finance as a function, whether it is more on like investment in fixed assets like land purchasing, construction किया, so these comes under fixed assets, है ना, या fixed assets के लिए हो या नहीं हो, then it comes here. Now it is largely concerned with the allocation of the firm's capital expenditure. As I told you, fixed asset comes under capital, and over as a related decision such as financing investments and dividend distribution, है ना, फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट कहीं हम इन्वेस्ट कर रहे हैं टू प्रोवाइड फाइनेंस, और उसका रिटर्न हमको मिल रहा है, तो उसका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन अगेंस्ट दैट इन्वेस्टमेंट डन. Then most of these decisions have been taken by finance department. Yes, every organization has one finance department, and accounts department is a part of it. It's not accounts department and finance department are same. Accounts department is a part of it, all, and it comes under HR office only, which affects the size and the timing of future cash flow and fund flow, whether it is in or out. In means inside the organization, it is coming inside the organization. Out is means it is going outside the organization. Okay, so now let us have the let us understand the forms of business ownership, uh, right from 12th commerce to till the age. It is same. बेसिक सोल प्रोप्राइटरशिप, अपनी दुकान, सिंगल ओनरशिप जिसे भी कहते हैं, पार्टनरशिप, दो या दो से ज़्यादा लोग, देन कंपनी, उसमें फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और है ना, ये दो तरीके के आते हैं। देन फिर फ्रेंचाइजिंग फर्म्स जो हमने नॉर्मली देखा है, फ्रेंचाइजिंग, इवन आजकल जो सागर साइकिल सूप वाला है,
साइकिल सूप वाला जी है, मैं भूल रहा हूँ उसका ब्रांड का नाम, उसकी भी फ्रेंचाइजी चलती है, जो एक समय साइकिल पे सूप बेचा करता था, आज बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, और भोपाल में बहुत सारे उसकी फ्रेंचाइजीज भी अवेलेबल हैं. सो franchisee business is taking up a pace nowadays. Now let us understand all these are in detail. So single uh, proprietorship माने single ownership में होता क्या है? As I told you, it is single ownership. So single ownership, it is owned by one person only. Now it is most common form of business we see. Like किराने की दुकान या हम जो छोटी छोटी दुकानें देखते हैं, या नॉर्मली वी इंडिविजुअली प्लान्स, तो हम लोग सिंगल सोल प्रोप्राइटरशिप वाली शॉप खोलते हैं, है ना, एज एन एंटरप्रेन्योर. समटाइम्स इट इज दो से ज्यादा लोग अपन एज अ फ्रेंड खोल रहे हैं टू स्टार्ट आफ्टर इंजीनियरिंग और सो, तो वो फिर पार्टनरशिप फॉर्म में आ जाती है, एंड इट हैज सर्टेन मोर लीगल डॉक्यूमेंटेशन, है ना. नाउ हियर इन सोल प्रोप्राइटरशिप इट इंक्लूड सम रिटेल स्टोर्स, एज आई टोल्ड यू, मैकेनिक सर्विसेज हैं, ग्रोसरी शॉप्स हैं, वेजिटेबल शॉप्स हैं, टेलरिंग शॉप है, क्लोथ मर्चेंट्री है, एंड इवन inventors or some person is selling online also, so that also comes under sole proprietorship. And it is fairly easy to establish a sole proprietorship, and the process running uh, by that method is very fair and simple. Now what are the advantages of this? It is easy to start and to also end the business also, because if it is a partnership, then you have to take care of the another partners also, if you want to start or if you want to close it down. Sometimes it happens, unfortunate one. The second one is being own your boss. Yes, you are your own boss in that business, and you can take your own decisions, but again you will be responsible for your decision if things are going against the planning. The third one is pride of ownership, as sole proprietorship has taken up the risk and deserve the credit. Yes, both things are there. As I told you, you will get the credit of your own thinking because you are a sole proprietorship, single owner. But similarly, you will be responsible for the risk taken up by you as well. Now, the fourth one is leaving a legacy behind the future generations. Yes, if you start your own business, then your future generations will get benefit of it, and they'll get the same kind of approach in their blood as well. Then the things is like retention of the company profit. Yes, you will keep your all the profits with you, whether if you are doing somewhere job, you will be getting salary or some kind of special incentives also, otherwise not. So here it is a benefit, all the profit you will take up with you, either in the form of saving or in the form of reinvestment in the same business. And no special kind of taxes can be given, we see in this. But the disadvantages, as I told you, you will be you have to be ready for all the risk you have taken as a sole proprietorship, and you have to take care of the funds alone here. Now comes the partnership firm. What is the partnership firm? It is similar to the sole proprietorship, except more than one of one person is involved here. Two or more people, we can say, together can start the business. And here, but it is like you have to share the profit and losses as well. And so this way it is it is having two or more people involved in. Now the sole proprietorship part, like sole proprietorship, partnership is relatively also easy to set up, but does not pay, but does not have to pay sort of taxes larger corporations do. However, partners themselves are responsible for the business losses, and the founder partners or informal agreements may run sometimes in the interpersonal problems, and this could sometimes this could happen that that organization may struggles, because if two or more people are there, two different minds or two or more different minds are going against the direction of each other, then the organization will struggle, otherwise not. Now the advantages, we know more financial resources will be available because two or more people are involved. So
We can share the responsibilities also. You can enhance the profits also. You can get the a little grand success as compared to the sole proprietorship. No special taxes again here. But risk is there because two to three people are involved. So that two to three people should have same level of mature understanding. If it happens, then it will be a best one. Then comes the company business. The company is a business here. It's a separate entity from the ownership or partnership, even having some legal rights of a person involved in it. Then it has certain advantages like it has limited liabilities. Liabilities is probably the most significant advantage of corporations. Limited liability means the owner of the business are responsible for the losses only up to the amount they invest. Because in companies, if it is public limited company, then a certain portion has to be invested by the owner. Rest will be taken up from the public or will be funded by the government most of the times. Since it's a company is a big organization, so we'll start if you start a company in a particular state or district, then the government associated association will increase, so they will give you this much land or lease amount land for lease of say 100 years, 200 years, 500 years. They'll give you water for free, power for free for next 2 years, next 5 years. This kind of things will happen. So investment will come down from owner level, and the rest of the amount, if it is a limited company, public listed company, they can ask for money from the company as well. I mean, from the public as well. Then comes the more money for investment. Yes, you can raise money. Size of the organization you can increase if your stock selling has increased and your profitability has increased. So you can very well flourish your business and increase boundaries of it, boundaries of your product reach. And disadvantages again, extensive paperwork will be there, double taxation will be there, two tax returns will be there because that comes under the corporate tax also will come and the owner tax also will come, है ना. तो this will initial cost बहुत ज़्यादा रहेगा, which will involve the lawyers and accountants and merchant bankers also. So initial जो amount रहेगा to invest for an owner will be high. Then and only then government and public will come up. Then comes the final one, that is franchising. So franchising is basically a business. It's a kind of arrangement in which owner of a you are owner of a trademark. I mean, trademark and trade name or copyright is of someone, and you have taken that trademark to follow under the same system, same set of rules by paying the trademark or the trade name to someone. है ना? And it is licensed by, it is licensed for others to use. If you have taken this franchise business, it is licensed to be used because you have paid some money for getting the license, and they will give you sometimes the pool of members to run that business, or they will train your pool of members in their fashion, in their style, because they could not play with the trademark or the brand name of their company and its products. So and they'll help you to sell the goods and services by their name in any part of the district, state, nation or international. है ना? So it can be also again comes under sole proprietorship. If we have taken a this thing single way you have taken, then it will be similar as sole proprietorship. And so suppose two or more people are involved in it, then it will be a kind of partnership firm, you know. And it has certain advantages, that is, it can be personal ownership, you can be your boss again, and you can be in the partnership also. A known brand will be with you, so it's better to no, kick start business, plug and run business rather, I should say. You need not to face that period,
समय लगता है, 6-8 महीने तो लगते हैं, साल भर तो लगता है। तो यहाँ नोन ब्रांड है तो दे विल सजेस्ट यू द एरिया, द शॉप, द साइज ऑफ द शॉप, तो सारी कैलकुलेशंस आपके बिहाफ पे वही करके देते हैं, और कितना स्कोप है वहाँ पे वो सारा कैलकुलेशन वो करके देते हैं, बिकॉज दे आर एक्चुअली डीलिंग विद, दे आर वरीड फॉर देयर ब्रांड, नॉट फॉर यू। सो जैसे एसबीआई बैंक या किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक से अपन लोन ले तो फ्री ऑफ कॉस्ट उस जमीन का पूरा लेखा जोखा एनालिसिस हमको बैंक करके देती है, क्योंकि वो मनी हमको उधार पे देती है ना, लोन जो हम लेते हैं तो उनकी मनी इन्वॉल्व हो रही है, हम जब रीपे करेंगे तब करेंगे, तो हमारे लिए वो एनालिसिस करके देते हैं पूरा कि ये सही है या विवादित जमीन है या क्या है। सिमिलरली इस तरह के बिजनेस में भी दे विल डू each and every exercise for you, so it's a kick start product, it's a kick start business, and you'll get your sale within a month itself. You start your business within a month itself with a good volume. Now there are disadvantages of a franchisee business is you won't be having exactly much control over the business, because the ethics, the procedures, the services or the products what we are going to deliver is tailor made, and everything is tailor made. You must be having a software that too will be tailor made. You cannot do any changes as per your want. Only thing what you can do is you have, since you have invested your money, you'll get the output as well, and that output's also a controlled one, because again it could happen that it's uske profit mein bhi uska hissa ho, so very less control is available. Tied to our suppliers, खुला है, tied to the suppliers. Now, operating a business, you had to probably like to keep cost down. Now, the finding the cheapest supplier to minimize your overheads and maximize your profit also. But being a part of a franchisee means you will be required to to use the franchisee supply network. Okay, then comes the cut off the profit. Yes, franchisor will expect a proportion of a profit if legal procedures are taken up that way, because some franchisor may seek for that cut off a profit, some may not. Okay, so these was the forms of business ownerships. Now let us go through quickly about the. This was not the slide. Okay, in next class today we'll again see the. Let us go through the balance sheet also. What is the balance sheet, and how these balance sheets are taken up. What is balance sheet? Let us see. Let me give you a brief detail of it, so that we'll start by tomorrow. It will start by tomorrow, but let us have a glimpse of it. What balance sheet is all about, what profit and loss statement is all about. Tomorrow we'll little get into the डिटेल ऑफ इट. बैलेंस शीट बेसिकली एक स्टेटमेंट देता है बिजनेस एसेट्स का. एसेट्स माना जो बिल्डिंग है, कार है, मशीनरी है, दैट आर द बिजनेस एसेट्स. देन लाइबिलिटीज है. लाइबिलिटीज माने उसके अगेंस्ट आपने कुछ लिया हुआ, देनदारी जिसको कहेंगे. देन शेयर होल्डर्स इक्विटी है. शेयर होल्डर्स का जो पैसा है वो भी आप एक्चुअली देनदार हो. एट a specific point in time they are offer a ना दे है ना. तो शेयर होल्डर्स है इक्विटी के
that at a particular time, and the items reported are corresponding to the accounts outlined, है ना, मतलब अकाउंट वाइज बैलेंस शीट बनती है, किसका कितना, है ना। एसेट्स क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर सेक्शन होता है बैलेंस शीट में जो कि आपके बिजनेस को वैल्यू डाउन करता है एंड कन्वर्ट इनटू कैश, कि उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू कितनी है। और बैलेंस शीट जो है वो आपके लिस्ट ऑफ एसेट्स का लिक्विडिटी बताती है। लिक्विडिटी माने इसको बेचो तो कितना मिलेगा आज की डेट में। सो दैट गिव्स यू दी क्लियर पिक्चर। उसमें भी एसेट्स में फिर करंट एसेट्स होते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, है ना, लाइबिलिटीज हैं, शेयर होल्डर्स हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट विल बी fund flow statements. Now what are these fund flow statements? फंड फ्लो स्टेटमेंट्स क्या है? फंड फ्लो स्टेटमेंट्स बेसिकली वो स्टेटमेंट्स हैं जिनको हम प्रिपेयर करते हैं एनालाइज करने के लिए कि हमारे कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशंस है बिटवीन टू बैलेंस शीट वो क्यों चेंज हुई है, उसका कारण क्या है। मान लीजिए आज हमने एक बैलेंस शीट बनाई, जैसे बैलेंस शीट में मैंने आपको बताया था, बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस शीट वो होती है कि आज का जो पोजीशन है, अगर हम अपनी कंपनी के एसेट्स को लिक्विडिफाई करें माने उसको कैश में कन्वर्ट करें तो उसकी कीमत क्या रहेगी, और 3 महीने बाद, ये हर क्वार्टर में हम करते हैं, तो आज के क्वार्टर में कितनी होगी। तो जो डिफरेंस है वो कहाँ हमको मिलता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट में मिलता है। सो इट ऑल्सो पोर्ट्रेज, ये हमको और बताता है कि इनफ्लो और आउटफ्लो फंड का कितना है। So the sources of funds and the application of fund for a particular period we can analyze from the fund flow statement. Now अब फिर अगर ये फंड फ्लो बता रहा है तो फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बता रहा है, ये हम देखते हैं। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट हमको क्या बता रहा है। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट हमको ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देता है जो कि समराइज करती है कैश के अमाउंट को और कैश इक्विवेलेंट को, है ना, एग्जैक्टली या कैश का अमाउंट हो या कैश इक्विवेलेंट हो, whether that cash is entering into the company or leaving from the company. This is called cash in. Cash in माने cash entering into the company, and कैश आउट माना लिविंग द कंपनी, है ना, कंपनी से जाने वाला पैसा। सो व्हाट वी कैन से एट द ब्रीफ कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है इज अ मेजर कि हाउ वेल अ कंपनी मैनेजेस इट्स कैश फ्लोज। कैश फ्लो माना बिल्कुल कैश में, नगदी जिसे बोलते हैं ना, नगद पे जो काम हो रहा है, तो दैट इज कैश एग्जैक्टली। और कुछ ऐसा पोर्शन जैसे डिबेंचर्स हैं या एफडीज हैं या इस तरह की चीजें हैं, दैट आल्सो कम्स अंडर कैश फ्लोज, जिनको तुरंत लिक्विडिफाई किया जा सके, तुरंत ऑन स्पॉट ये देना है, इसके अगेंस्ट कैश लेना, उसकी एक सर्टेन वैल्यू है, मिनिमम मुझे इतना मिलेगा ही मिलेगा उसमें। सो दैट गिव्स यू दी एग्जैक्ट क्लियर पिक्चर ऑफ कैश पोजीशन, मीनिंग हाउ वेल द कंपनी जनरेट्स कैश टू पे इट्स डेट ऑब्लिगेशंस। डेट ऑब्लिगेशन माने उधारी पटाना, है ना, एंड फंड इट्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और वो एक तो हम ये कैश जो क्यों रखते हैं अपने पास, ये इसलिए रखते हैं कि उधारी चुकाई जा सके और जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है उनको निकाला जा सके, इसलिए हम अपने पास कैश भी रखते हैं। जैसे हमने बताया था कि हम बजटिंग करते हैं, तो बजटिंग करते हैं तो मोटा मोटा अगर हम बिजनेस चालू करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम बिजनेस चालू करते हैं तो हम क्या करते हैं, मोटा मोटा बिजनेस अमाउंट को 3 टुकड़े में तोड़ते हैं। एक मेरे को माल में लगाना है, एक मेरे पास हिस्सा पड़ा रहे, और एक मेरे को देनदारी में देना है। बीइंग अ ओनर, मेरे पास मान लीजिए 10 लाख रुपए, तो मैं क्या करता हूँ, 3 लाख रुपए का मैंने मान ले लिया, क्योंकि नई फर्म हूँ तो मुझे कोई उधार देगा नहीं। ठीक,
तीन तीन लाख जैसा मैंने अपने पास कैश ले लिया कि अगर मैंने, और 3 लाख का मैंने 3 साढ़े 3 लाख का अपना माल उधार पे दे दिया, क्योंकि मैं नया हूं तो मेरे को उधारी में ही चलाना पड़ेगा, 1 महीने की रोलिंग वहां से चलेगी। तो 1 महीने की रोलिंग जो मैं मान के चल रहा हूँ वो कर अटकती है, तो मेरे पास कैश फ्लो होना चाहिए काम चलाने के लिए। कुछ ऑपरेशन कॉस्ट है, कुछ सैलरीज हैं, कुछ एक्सपेंसेस हैं, उसके लिए मेरे हाथ में कैश होना चाहिए। तो ये एक हिसाब है मोटा मोटा दुकानदार का, वो कैसे काम करता है। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर फर्म, बिजनेस फर्म की बात करें, तो वो इससे ज्यादा हिस्से करता है अपने कैश फ्लो के, उस हिसाब से उसको इन्वेस्ट करता है। और दैट डिपेंड्स कि उसने कितने फैक्टर्स हैं जिसमें ब्रेक किया है, और उतने फैक्टर्स में फिर वो कैश को उतना ब्रेक करेगा, और एज पर द रिक्वायरमेंट उसको यूटिलाइज करेगा, बिकॉज ही और शी कैन प्री थिंक कि कौन कौन से फैक्टर आ सकते हैं, उन फैक्टर के लिए कितना कितना हिस्सा मुझे टोटल अमाउंट से रखना चाहिए, and then they can plan and run the business. Okay. And one thing it should be there कि business में we had to gear for the best, expecting the best and ready for the worst. So if these two things are with us, then we can run any business at any point of time. And another thing is what is the break even point? Let me have a glimpse of it also. ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट सादे शब्दों में वो पॉइंट होता है जहां पर जो हमारा प्रॉफिट और लॉस है वो जीरो हो जाए, माने मैंने उतने नंबर ऑफ गुड्स बेच दिए, उतने नंबर ऑफ गुड्स मैंने बेच दिए जितना कि मेरी लागत थी। अब उस पॉइंट पे ना मेरे को बेनिफिट है ना मेरे को फायदा है। अगर वहां से एक भी मैं ज्यादा बेचता हूँ तो मेरे को फायदा है, अदरवाइज उससे एक नीचे बेचता हूँ तो मुझे लॉस है। तो बिल्कुल जीरो जीरो पे है ना। तो कैसे कहेंगे इसको कि ब्रेक इवन पॉइंट in terms of accounting that refers to a situation where company revenues and expenses are equal in a specific accounting period I'm talking about for a particular project, for a particular accounting time, accounting period। if you see तो कंपनी के रेवेन्यू जो एक्सपेंसेस हैं, रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस बिल्कुल इक्वल है। सो देयर आर नो नेट प्रॉफिट और नो नेट लॉस टू द कंपनी। इफ वी ब्रोक इवन the BEP break even point, that means either revenues are needed to be reached in order to compensate the expenses incurred during a specific period। so ब्रेक इवन को अगर हम ब्रोक करते हैं, आगे निकलते हैं तो एक्सेस है, पीछे निकलते हैं तो एक्सपेंसेस इंकर हो रहे हैं, माने इंकर हो रहे हैं माने चालू हो गए एक्सपेंसेस, माने हम लॉस की तरफ जाना चालू हो गए। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक कंपनी है, XYZ कंपनी है, मान लीजिए 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट किया एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में। तो मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट अगर 1 लाख रुपए है और उसने एक लाख रुपए का रेवेन्यू भी जनरेट किया, तो इस केस में कंपनी ने अपना ब्रेक इवन पॉइंट अचीव कर लिया। सो दैट कंपनी, दैट पर्सन हैज नथिंग टू लूज, बट साइड बाय साइड बट he or she has not earned anything even, है ना। so this is break even point। I'll share with you the notes also, notes of it also। Okay, so I have covered my today's portion also, and I've given you the glimpse of some deeper financial sections today itself। Tomorrow we will see in detail also, and we have to complete our syllabus before PUT2 also, you know, to think of it, and I'll share with you the notes of the same by today itself till what I have covered। Okay, so tomorrow or day after tomorrow or by Monday we'll go for a test of Unit 3। If you have any doubt, you can ask me now।
Sudhanshu says, I want to ask you about minor project as I want to change my course. I'll talk to you in detail by personally by calling. Okay. Okay, I'll call it a day. Thank you. Thanks for attending the same. At 3 p.m., be ready for the project presentation.